Hello everyone and welcome back to Basics with Himang. So in today's video, we will try to uncover what does SIP and lump sum mean when it comes to investing in mutual fund. अब दोनों को हम समझेंगे डीप के अंदर कि इन दोनों का मतलब क्या होता है एंड डज इट रियली मेक सेंस फॉर यू एज एन इन्वेस्टर टू आइदर इन्वेस्ट और गो विद सिप और टू इन्वेस्ट lump sum in mutual fund. So let's begin. तो अभी हमने सबने सिप तो सुना होगा दैट कि एवरीवन कीप्स टेलिंग अस सिप कर लो सिप कर लो। तो सिप होता क्या है? तो सिप का बेसिक मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो वी डिसाइड लेट्स से वी इन्वेस्ट एक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ ऑन अ फिक्स डेट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसआईपी करना या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। अभी इसके कुछ फायदे भी है और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो फायदा ये है दैट since we are doing SIP every month, so there would be times when market is high and there would be time when market is low. So we would be doing SIP, let's say when market is quite high, and we would be investing money when market is low. So over a period of time, ये जो cost होती है हमारे investment की, ये average out हो जाती है. So in a way, we don't have to worry about perfectly timing the market. So this is the very good advantages that we have with SIP. Another good advantage is I believe is that it kinds of help us build momentum and habit, and it keeps us disciplined when it comes to investing. So we know that every month ये हमारा एक portion amount कटता रहेगा towards SIP, and it is like in the same way like people pay EMI, right? So they pay EMI towards their loans that they have taken, and you guys or retail investors would be giving some fixed amount towards investment every month. So ये एक SIP का another advantage है. So before I discuss what is the biggest disadvantage of doing SIPs, which I feel is, I would like to discuss two concepts now. One is called upward averaging and second is called downward averaging. अब ये दोनों होते क्या है? Let's say as of today, like in this month, I invest 10,000 rupees of in any mutual fund. अभी नेक्स्ट महीने फिर मैं 10,000 डालता हूँ, फिर उसके अगले महीने फिर मैं सिप के थ्रू 10,000 डालता हूँ। बट लेट्स से मार्केट इज डूइंग ग्रेट एंड ऑप्टिमिज्म की वजह से मार्केट की जो वैल्यू है द कंपनीज दे हैव बीन डूइंग ग्रेट। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली चल रही है। सो एवरी मंथ विद 10,000 रुपीज आई वुड कीप गेटिंग लेस एंड लेस नंबर ऑफ यूनिट्स बिकॉज मार्केट की परफॉर्मेंस के अंदर जो नेट एसेट वैल्यू है म्यूचुअल फंड का वो बढ़ता जा रहा है। अभी ऐसे आप नोट करेंगे ना, लेट्स से 3 मंथ डाउन द लाइन, देन यू वुड रियलाइज दैट आपकी जो एवरेज यूनिट की जो कॉस्ट है फॉर दिस म्यूचुअल फंड्स देन इट हैज गॉन अप। सो इस प्रोसेस को बोला इस ये प्रोसेस को बोलते हैं अपवर्ड एवरेजिंग। डाउनवर्ड एवरेजिंग क्या होता है? लेट्स से आज एक हमें म्यूचुअल फंड की जो यूनिट है 100 रुपीज़ की मिल रही है एंड मार्केट इज डूइंग सो लाइक इट इज़ नॉट डूइंग दैट ग्रेट। मार्केट में इकोनॉमिक की एक्टिविटी की वजह से कुछ डाउन टर्न चल रहा है एंड या फिर कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। तो जो नेट एसेट वैल्यू है किसी भी एक हमारे म्यूचुअल फंड की जिसमें हमने डिसाइड करा दैट वी वुड इन्वेस्ट इन, सो उसका प्राइस लेट्स से नेक्स्ट मंथ हो गया 90 रुपीज़ एंड मंथ आफ्टर दैट उसका प्राइस हो गया लेट्स से 85 रुपीज़। अभी आप नोट करेंगे 3 मंथ्स डाउन द लाइन जो आपका एवरेज यूनिट का कॉस्ट बैठ रहा है, ओके, दैट हैज़ कम डाउन लाइक बिलो 100 रुपीज़, राइट? सो बट इन फर्स्ट एग्जांपल दैट वी सॉ वहाँ पे प्राइस यूनिट का बढ़ रहा था म्यूचुअल फंड की यूनिट का, एंड सेकंड केस में प्राइस यूनिट हमारा एवरेज कॉस्ट जो है वो म्यूचुअल फंड की यूनिट का घट गया। तो इस सेकंड प्रोसेस को बोलते हैं डाउनवर्ड एवरेज। So as a retail investor, for us to get the maximum benefit out of mutual fund investing, हमको always downward average करना होता है आपका प्राइस। तो अभी एक सिप का डिसएडवांटेज है जो मुझे लगता है दैट रिटेल इन्वेस्टर्स कैन अवॉइड। अब वो ये है, पर अभी ऐसे समझिए, इफ देयर इज अ रैली गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड इफ यू कीप डूइंग सिप एवरी मंथ, ओके, सो आपका जो सिप का यूनिट का प्राइस है वो बढ़ रहा है एवरी मंथ बिकॉज मार्केट इज डूइंग ग्रेट। So technically, it doesn't make sense for us to keep doing SIP because market is going great and we are buying at a higher value. So ऐसे क्या हो रहा है, हमारा जो एक पर यूनिट और एवरेज यूनिट का कॉस्ट है एक SIP के यूनिट का वो अपवर्ड एवरेज हो रहा है। तो मतलब आज हमने 100 का लिया, वो सेम यूनिट कल 120 का हो गया, सेम अगले महीने वो यूनिट हमारा 150 का हो गया एंड वी कीप डूइंग SIP। तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट आ रहा है वो आप नोट करेंगे बढ़ रहा है एक हर एक मोमेंट और हर एक मंथ पे वो कॉस्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। So in a way, we are getting less number of units every month by investing same amount. So एक ये advantage disadvantage है जो मुझे लगता है that retail investors can avoid.
अभी बात करते हैं लमसम की कि लमसम क्या होता है। In a SIP, what we do, we invest fixed amount every month. In lump sum, what we do, we decide when do we want to invest, a big chunk of money. It could be, let's say, a small chunk of money as well, but we invest only one time. We do not allow or we do not invest periodically every month, as in the case with SIP. So lump sum है एक बार लगाते हैं. अब यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि if we time the market in a wrong fashion, then we could end up buying units at a very higher price. So same could be applicable. Let's say market में rally चल रहा है and हमने उसी price पे ये एक लमसम मोटा पैसा लगा दिया. So we would end up purchasing all these, SIP units at a very higher cost compared to what we could have bought when the market is not doing that great. अभी मैं बात करूँ पर्सनली मेरा, सो आई स्टार्टेड बाय डूइंग सिप्स ओनली. मैं सिप का लाइक एक डेढ़ साल मैंने काफ़ी सिप किया एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज दैट इट प्रॉब्ली डजंट मेक सेंस फॉर मी टू डू सिप्स बिकॉज आई हैव बीन एक्टिवली एंगेज इन मार्केट. सो आई हैव बीन एक्टिवली मॉनिटरिंग मार्केट. मुझे पता है कि मार्केट में अभी हाई रैली चल रही है या फिर मार्केट में अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है या मार्केट अभी डाउन चल रही है. सो what I typically do, I have allocated a budget that I need to invest every financial year, okay, towards mutual funds or towards in a lump sum or in a SIP. So what I do, so whenever I find opportunities that okay market is not doing that great or market में बहुत time से dip चल रहा है, at that moment I go and invest let's say X amount of my allocated budget towards buying mutual fund units. So that is something that you guys can also do. So instead of doing SIP, I believe if you actively monitor market and if you keep reading news and if you know the trend going on in macro and micro, then you would have an idea, okay, अभी market में क्या चल रहा है. Okay, so at that moment you can decide, okay, since I wanted to invest, let's say X amount of money, so buy, I can invest some amount from this X amount and then I will buy this much of or this many units of mutual fund. So this is what I have been doing, and if you do not follow market or if you do not follow news, then it would make sense for you to do investments in mutual fund via SIP. But if you keep a track of market, that what is going on in market, मार्केट डाउन चल रहा है कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है या फिर बहुत अप जा रहा है, एट दैट मोमेंट यू कैन डिसाइड ओके मेरे को सिप करना है या फिर मुझे लमसम करना है. So it is totally up to you, your investment style and the investment way that you're comfortable with. So I hope now you have gotten clear idea about SIP and lump sum and इन दोनों के क्या advantages है disadvantages है. So मोटा मोटा understanding में यही है. There is nothing rocket science as such which is happening and अभी आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल वुड हेल्प यू डिसाइड कि अभी आपको सिप करना है या फिर लमसम करना है. इफ यू वांट टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट आई वुड से यू कैन बिगिन विद सिप बिकॉज एनीवेज मार्केट इज नॉट डूइंग नॉट दैट ग्रेट. थोड़ा अभी करेक्शन ऑलरेडी मार्केट में हो रखा है, सो इट वुड मेक सेंस फॉर अस टू डू सम सिप्स नाउ. But when there would be a rally, I don't think that SIP would help because anyways market is going up and up and that would eventually increasing the price of mutual fund units higher. So it probably won't make sense at that time. I hope you liked today's video. Thank you for watching and I'll see you soon.